uh, uh, I mean, again, starting from the beginning, then going from electrostat and magnetostat. Uh, उसके बाद आप थोड़ा पहले ही थक जाते हो. Okay, so this time I am going to start from Maxwell's equations. Okay, Maxwell's equation onwards. First of all, let us revise, and then Maxwell's equations. And boundary conditions. Let us discuss from here. Okay, so I'll be putting questions, and let us quickly check. The first question is, so सब लोग try करेंगे. Okay, let us keep it like a practice class also. So फटाफट revise करते जाएंगे. So the first question is this. एक बार check करना, are you getting it? Got it, everybody? Yes. So Yes, sir. the first question is, a plane electromagnetic wave is propagating in a lossless dielectric, and the field equation is given like E is equal to E naught x cap plus a z cap and e to the power I k naught minus ct plus x plus root 3 z, x plus root 3 z. Okay, and unit vectors x cap z cap, you know. What is relative dielectric constant of the medium that we have to calculate? And obviously nothing is given about the uh, magnetic properties of the material, so we will consider it to be non-magnetic material. Okay, so everybody read the question. It's very important to read the question carefully. So this is a question from NET June 2021. 2011, sorry. 2011. So anybody can tell what will be the approach? We have to calculate epsilon r and a. Value of these two things we have to calculate. So the first step is to see, K dot R compare करेंगे. to write it in the original form. What is that? क्या है वो? E is equal to E naught vector e to the power iota k dot r minus
ओमेगा टी। इस फॉर्म में सबसे पहले एक क्वेश्चन को लिखा जाए। तो इस फॉर्म में लिखने के लिए यू सी दिस इज दैट आर पार्ट, सो इट विल बी k नॉट x I कैप प्लस x कैप लिखते हैं, x कैप प्लस k नॉट √3 z कैप। So this will become k, and take dot product with r, which is x cap plus z cap. This is k dot r. देखो समझ आता है? Yes, sir. And minus omega t will be minus k naught. CT. Don't forget this k naught. Okay. K naught ct. So what is omega? K naught C. K naught c. ओमेगा इज के नॉट सी। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, जस्ट कंपैरिजन से आ जाता है, बट K dot E is equals to 0. सो दिस इज के, दिस इज आर, एंड दिस इज योर ओमेगा इज इक्वल टू के नॉट सी। ओके, सो नाउ जो इलेक्ट्रिक फील्ड का पोलराइजेशन है, इट इज इन दिस डायरेक्शन, आई मीन इट इज इन एक्स कॉमा जेड प्लेन। like electric field is something on the xz plane. So that is called the polarization of electric field. If somebody asks you what is the polarization, so the polarization of the electric field is the direction polarization of the electromagnetic wave is the direction of electric field, correct? So now we have to calculate the refractive index. So for that, in two mediums we have to compare the velocities. Okay, so what is velocity here? So what is value of k that we got? K vector क्या आया बताओ भाई? K naught plus K naught √3. x cap plus K naught √3 z cap. This is K vector. Sorry. Okay. And we have to compare the velocities. Let us calculate the velocity. What is velocity is equal to? V is equal to Phase क्या होता है? velocity. Phase velocity Omega कितना by होता है? K. Omega by D. K. So let us write V, velocity V is equal to omega by K. What is omega? K naught C by what is K? K naught Under X root of cap. K naught square Sorry, plus magnitude. 3 K naught square. That is equal to C by 2, I think, na? C by 2? Yes. Check करना एक बार. Correct? So Yes, sir. what is refractive index? C by V. Yes, sir. So refractive index will be equal to 2. Yes? Sir. ये कैसा आ रहा है? Zoom.
अभी ठीक आ रहा है? So now refractive index is equal to under root of epsilon r mu r. For non-magnetic material, it will be equal to under root epsilon r because mu r is 1. So n epsilon r is equal to कितना आ गया? 4. See this? Done. बाकी लोग भी देख लो जरा. Is that okay? Yes. Check the next question. देखो जरा ध्यान से सभी लोग. I will erase this one now. से बाउंड्री कंडीशन से होगा क्या? Yes. It is based on boundary condition. So let us revise quickly the boundary condition. क्या है boundary conditions? What are the boundary conditions? Electric field parallel component continuous. So एक बात ध्यान रखना है हमें कि we have been only given that there is no free charge on the surface. So we have to apply that formula in which free charge is 0. Okay. So let us do. This is net June 2014. And suppose consider at the interface between two medium epsilon and epsilon 2, no charges on the surface. So it is D suppose going perpendicular like above this. is equals. This is suppose epsilon 1, this is epsilon 2. Field is electromagnetic wave is going like this. And first of all, you know, E, suppose this medium 1. So E1, E parallel above is equal to E parallel below. Correct? There is no involvement of charge in this. Yes. And D perpendicular above Is equals to D. is equal to D perpendicular below. Because in this free charge is involved, which is 0. Free charge is involved, na? Yes. D perpendicular. So अगर मैं यहाँ पे E parallel लेता हूँ, E parallel component, what will that become? Sin theta. सबसे पहले parallel नहीं, sin theta cos theta is not required ना, just inequality we have to see. Okay. So E parallel above is equal to E parallel below. So I can write D का formula क्या होता है? Epsilon E ना? Yes. So that means D, what you can write for E parallel in terms of D I want to write. So D parallel above by epsilon 1 is equal to D parallel below by epsilon 2. Correct? It is given that epsilon 1
is greater than epsilon 2. ये ठीक है? देखो D का परपेंडिकुलर कंपोनेंट अबव है, तो ये बात तो आपको समझ आ रही होगी कि D इज एक्चुअली इज इक्वल टू D परपेंडिकुलर प्लस D पैरेलल. आर यू गेटिंग दिस एज अ वेक्टर क्वांटिटी? यस. तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज इक्वल, so only comparison of parallel component can be done to give inequality in D. सबसे पहले ये समझो. तो पैरेलल में क्या हो रहा है कि D पैरेलल above is equal to epsilon 1 by epsilon 2 D parallel below. Which parallel component is greater? 1 or 2? Tell me. 2. D parallel to B is greater than D parallel A. Sorry, D parallel? Epsilon 1 is greater than epsilon 2. I mean, this is 1, this is 1 and this is 2. So this is 1 and this is 2. तो कौन सा बड़ा है? D2 component. कैसे? Epsilon 1 is greater than epsilon 2. So D parallel is 2 times. D parallel 1 is 2 times, no? D parallel 2. Suppose it is 2. Suppose this is 2 and this is 1. ऐसे समझो. So which one is greater? 2 is greater or 1 is greater? 2 is greater. Oh, D is epsilon. आप लोग, हाँ बताओ. Which one is greater? D2 is greater or D1 is greater? अगर मैं यहाँ 2 रख दूं तो D parallel 1 is equal to 2 times D parallel 2. One is greater. 1 is greater, na? So D1 is greater than D2. Is that okay? सर हमेशा नंबरिंग से कंपेयर कर सकते हैं बिकॉज कंफ्यूजन होता है. हाँ, ये तो हमेशा ही बेस्ट है, बिकॉज अगर यहाँ एप्सिलॉन 2 बड़ा होता तो चीजें कुछ और होती, बट एप्सिलॉन 1 बड़ा है. और चार्ज फ्री रीजन में हम डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते डी पैरेलल अबव इक्वल्स टू डी पैरेलल बिलो बिकॉज नहीं, डी पैरेलल नहीं कर सकते. इट इज रिलेटेड टू पोलराइजेशन. सी द फॉर्मूला फॉर पैरेलल. इक्वल्स टू पोलराइजेशन अबव. हाँ, so don't go into polarization, na? Go, see, charge free is given, so use perpendicular component of D and parallel component of E. That is the best way. ओके. यहाँ भी कोई फ्री चार्ज इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ भी कोई फ्री चार्ज इन्वॉल्व नहीं. एंड मैं D पैरेलल से D के बारे में कैसे कह पाया, कोई बताएगा? एनीबॉडी? बिकॉज डी परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑलरेडी आर इक्वल है, इक्वल. तो इक्वल है. तो जब मैं मॉड लूंगा, आर यू गेटिंग इट? एक्चुअली D क्या होगा? अंडर रूट ऑफ D perpendicular square plus D parallel पैरेलल square. But स्क्वायर. since this is equal, so only this will play the role. ओके. ओके, थैंक यू. Now, what about electric field? You can say D perpendicular A is equal to D perpendicular B. D is epsilon E. So epsilon 1 E 1 perpendicular is equal to epsilon 2 E 2 perpendicular.
एंड ई का पैरेलल कंपोनेंट सेम है, सो जस्ट परपेंडिकुलर कंपोनेंट से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बता सकता हूं. सो अगेन you can take E1 is greater E2 than, is greater than E1. so now what will happen? E2 is greater than, so you can write modulus of E2 vector is greater than, यहाँ पे वेक्टर लगा सकते हो because is greater than modulus of E1 vector. ये देखो जरा, सभी लोग समझ गए? बाउंड्री कंडीशन इस क्वेश्चन से काफी हद तक क्लियर हो जाता है. और इनइक्वालिटी जहां भी इन्वॉल्व हो, दिस इज ग्रेटर देन दिस, पुट दिस 3 2 और 2 1 वट एवर यू वांट टू राइट, सो दैट वो कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए कौन बड़ा है कौन छोटा. चलो ये भी क्लियर हो गया भाई सबको? इज दिस क्लियर? Yes, sir. ओके. Let us do this question. Read everybody. वेव इक्वेशन से कंपेयर करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के E बाय B इक्वल्स टू C से B निकालेंगे, ऐसा कुछ. Net June 2013. सर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के फिर Electric field is मैग्नेटिक given. फील्ड आई Electric मीन field is already given. सॉरी So E is equal to E नोट बाय B E नोट naught इक्वल्स टू C करके cos B नोट cos pi, and this is 0.3 pi na, 0.3 pi i पाई cap plus 0.4 j plus 0.4 j dot x I cap plus y j cap. एक बार चेक करते रहना. minus 1000 t, minus 1000 t, and what is the polarization? K cap. Acha, in previous question, one thing we missed, capital A was also required. I think in first question that we did. First question mein the value of capital A was also required. So just take K dot E equal to 0 because it is electromagnetic wave. So direction of K and electric field will be perpendicular. So take K dot E is equal to 0. You will get the value of A. Okay. ठीक है भाई? In the first question. So K dot E 0 कर देना. You will get the value of. So ये भी बड़ी important condition है for the transverse nature of electromagnetic wave. कि K और A perpendicular है for the transverse nature of electromagnetic wave. Okay. So
ये इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोफाइल गिवन है, so you have to calculate magnetic field is equal to question mark. So obviously Faraday's law. What is Faraday's law? Del cross E is equal to minus del E minus del B by del B by del T. del T. So take Fourier transformation IK cross E, because plane wave है, is equal to I omega B, correct? So what is B is equal to K cross E by omega. K cross E by omega. देखो समझ आ रहा है? 0.4 pi भी होगा. It will be 0.4 pi. Faraday's law. So हम लोग क्या करते हैं? This is written as IK and this as minus I omega, correct? और vice versa. तो बताओ K cross E करो जल्दी से. 0.3 pi minus J cap. So it will be B is equal to, what is K? 0.3 pi cap I cap plus 0.4 pi J J cap cross K K cap cap into E naught electric K field cap. Yes. upon omega. So I cross K will give you J minus J. So this will be 0.3 pi minus J cap plus J cross K X cap 0.4 I pi cap I cap into electric field by upon omega. omega. This is the profile. इतने इजी क्वेश्चंस आएंगे क्या सर? You आ चुके हैं तो इसलिए. तब नहीं आएंगे. इनइक्वालिटी वाला जो अभी वाला क्वेश्चन है वो जो इससे पहले किया है मैंने, हाँ जी. तो वो तो अक्सर ही गलत हो जाता है. जस्ट इन कौन बड़ा है कौन छोटा है, इवन दो कि आपको आता है फिर भी यू मेक मिस्टेक्स. ओके, लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो फिर अब नाउ आई एम नॉट डूइंग. इफ इजी है तो फटाफट करो भाई. आई हैव पुट इट इन द ग्रुप. YZ plane forms a chargeless boundary between two media. So suppose this is YZ plane. This is YZ plane. This is forming a boundary. And this is E epsilon left. This is epsilon right. Something like this. Okay. And
YZ plane forms a chargeless boundary between two media of permittivities epsilon left and epsilon right, and epsilon left by right is 1:2. Okay, it is 1:2. So that means this is rarer medium, this is denser medium optically. If the uniform field E left given, E left is equal to C I cap plus J cap plus K cap, E राइट बताना है। चलो बताओ भाई, सोनिया बताओ। सी है क्या आंसर सर? हम्म, सी आंसर है क्या सर? आंसर है ये मत बताओ, बताओ कैसे करना है। E1 epsilon 1 equals to E2 epsilon 2. The perpendicular component of. कुछ ये सब नहीं देखोगे कि कौन सा कंपोनेंट है क्या है। Yes, sir. तो दिस इज तो वाईजेड प्लेन। एक तो एक्स वाला वाईजेड प्लेन के जो परपेंडिकुलर होगा वो कौन सा कंपोनेंट होगा, सर इसके पैरेलल और परपेंडिकुलर पैरेलल कौन सा कंपोनेंट कंपोनेंट होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का सी पैरेलल आई। और डी का परपेंडिकुलर, यही तो कर रहे हैं बार बार। यस सर, सी तो जे कैप इलेक्ट्रिक प्लस फील्ड सी का के कैप पैरेलल तो पैरेलल कंपोनेंट होगा। होगा वाईजेड कंपोनेंट। यस सर, तो सी जो जे ई कैप राइट प्लस सी होगा के कैप। उसमें सी यहाँ पे तो कुछ बदलेगा ही नहीं, यस सर। ऐसे ही लिख देंगे। यस सर, और और आई डी का कंपोनेंट को हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट, परपेंडिकुलर से तो डी परपेंडिकुलर लेफ्ट इज इज इक्वल टू इक्वल्स डी टू डी परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर राइट। राइट। तो ठीक है, वहां तो पे एप्सिलॉन एप्सिलॉन एल सी ई परपेंडिकुलर लेफ्ट इज इक्वल टू एप्सिलॉन एप्सिलॉन राइट आर। ई परपेंडिकुलर राइट। यस सर, व्हाट इज तो ई परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर कंपोनेंट, लेफ्ट सी आई कैप लेफ्ट परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज राइट एक्स, हमें निकालना है। सी परपेंडिकुलर आई इज कैप, एक्स, तो सी आई कैप, परपेंडिकुलर इज सी आई एक्स, कैप। एक्स यस कंपोनेंट। सर, यस सर, सी ठीक सी है, बिकॉज ये कंपोनेंट। वाईजेड प्लेन है, so perpendicular is x component. So what is E यस, left? It is given. So ई रेशो epsilon L C. सी इज इक्वल्स Okay. टू एप्सिलॉन आर ई Epsilon R, परपेंडिकुलर राइट, ई and परपेंडिकुलर राइट, बिकॉज वी नीड टू फाइंड आउट। we want this. So it is E perpendicular right. Bas, you got it. E यस, perpendicular right. X component is E L by E R 1/2। into C. That is C by 2. Okay. यस सर, So put अब it here आंसर 1 by आएगा। 2 यस I cap. सर, मैंने कर दिया सॉल्व। Okay. शिवेश, यस सर। क्या बता रहे थे तुम? तो यही था, सी ऑप्शन यही है सर। तो ऑप्शन मत बताओ यार, फिर यस ऐसे सर, तो मैं ये ABCD बैठ के बोलता जाऊं हर क्वेश्चन में, नो ए सर, होगा बी मतलब होगा। सॉल्व ऐसे करो, ऐसे ही है सर। सॉल्व किया है ऐसे, यस सर। ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। चलो ट्राई करो, सॉरी आई थिंक क्वेश्चन सर पॉइंटिंग वेक्टर निकालना है।
Pointing vector. Power per unit area means energy per unit time per unit area means pointing vector. So a plane wave is traveling along the positive z cap direction. The maximum electric field, matlab E naught is given 10. Approximate maximum value of power per unit area. So what is power per unit area? Approximate. Intensity. So if you have seen, Intensity is also power per unit area. हाँ, intensity is that. आपने अगर आपको याद होगा तो I have derived this epsilon naught by 2 C epsilon naught E naught square. Average power, average है ये, cos square theta वाला term half ले लेते हैं. Okay. Check this in your copy. Half epsilon naught C E naught square. So this is intensity. You can directly calculate because everything is given. Just average intensity का जो formula है, that was to be seen. Right? You have seen this formula or not? Yes, sir, but I do not have any notes to. E is equal to E naught cos of something. B is equal to B naught sine of something. We can derive it ना? Yes, sir. Okay? तो ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए. Actually derive करने का टाइम भी नहीं होता. But even if you don't know, you can derive it quickly. So dimensionally, how you calculate power? Integral V S dot dA S. ना? Yes? Yes, sir. Yes, sir. S dot dA. Yes, sir. तो Because प्रोफाइल सिंपल cos की प्रोफाइल ले लो and then you can quickly derive. Okay? तो सब में रिलेशन है, वो एक बार देख लेना आप. After taking average, equations become very, very simple, right? सर ये हो गया क्या क्वेश्चन? बस इसमें मैग्नेटिक इंडक्शन भी पूछा है. हाँ, तो that magnetic field पूछा है ना? Both they have asked. Yes, sir. So you know E naught. By B not equals to. So पहले तो ये निकाल लो intensity and then E naught by C लिख लो. Okay? Okay, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रोफाइल इतनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड की प्रोफाइल 10 by C. ठीक है? Okay, check the next question that I have sent you.
2019 एक परमिटिविटी, मैंने आपको बताया है कि परमिटिविटी जो होता है दैट इज अ टेंसर क्वांटिटी, सो इट इज गिवन लाइक दिस. Sir, did not get the question. Is the question? Not received. Yes, sir. Okay, sir. Now Came, sir. okay, जरा पढ़ो पहले क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन. You know D is equal to epsilon E. This is a vector, this is a vector, this is a tensor. So this is written as dx, dy, dz. This is written as a 3 cross 3 matrix like this. And this is written as a vector ex, ey, ez. This I have told you. For polarization also, for permittivity also, these all are tensorial quantities. Chi, epsilon, and what else? Alpha. All these are actually tensor. Alpha represents. P is equal to alpha ही होता है ना? Polarizability. We have calculated na for hydrogen atom type problem and all that. Okay. The permittivity tensor of a uniaxial isotropic medium is given by this. The medium is anisotropic, so that's why permittivity is not a scalar, but it is a tensor. The wave number of electromagnetic plane wave polarized along x direction. So electromagnetic wave polarized along x direction का क्या मतलब है? Anybody? Electric field is in. Sorry, electromagnetic wave is traveling along its direction. No. Polarized means electric field component Polarization is means polarized in electric x field is in direction. x cap direction X. Okay. and And magnetic propagation is in field j cap J direction. cap direction. In this medium, so we have to write the wave number. K लिखना है. चलो try करो. No idea, sir. So you can see here, if I write it, it will become like 4 epsilon naught, 4 epsilon naught, 4 epsilon naught. Like that it will become na? Yes or no? Yes, sir. So if you write dx, suppose, it will become what? Tell me. How it goes? 4 epsilon naught Polarizability EX. ये ऐसे चलता है ना? Yes, sir. EX Ex. plus 0 plus 0. dy? 4 epsilon naught EY. dz? 4 epsilon naught EZ. तो बहुत आसान हो गया क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखो तो. D is equal to epsilon E. That means epsilon R, epsilon naught E, correct? Yes, sir. What is epsilon R here? By chance. It is equal to 4. बोलिए भाई. Is it given? हैं?
Yes or no? Yes, sir. And what is Kc by omega? Refractive index. Yes, What is sir. what is refractive index? C by Two. V minus R. अरे अंडर रूट एप्सिलॉन Root. r ना for non अच्छा, magnetic material. okay, okay. Root epsilon r mu r. हाँ, but mu r is 1. So what is k? निकाल लो. क्या वैल्यू आएगी k की? तो 2 times omega by omega by C. c. And 2 times n is equal to 2 na. So k is equal to 2 times omega by c. And k naught is given na in the question. K naught is given. So k is equal to 2 times k naught. This is a good question. किसी को कोई डाउट है तो प्लीज यू कैन डिस्कस. सर ये लास्ट स्टेप बता. लास्ट स्टेप पहले क्वेश्चन देखो. आई हैव टेकन इट फ्रॉम द क्वेश्चन. Suppose it is traveling from some vacuum to a medium. So it is already given ki what is the wave vector of that. In terms of wave number k naught we have to tell. Okay. So originally it is this. And now it is k. So actually wave vector has increased by 2 times by going into this medium of refractive index 2. समझ आ गया? What will happen to velocity? It will be decreased by, from c it will become c by 2. समझ गए सोनिया? नहीं सर. अरे kc by omega is equal to n आ गया ना. ये हो गया लास्ट. तो लास्ट स्टेप में ये तो गिवन है कि ओमेगा बाई सी k नॉट है. व्हाट इज k? फॉर्मूला क्या होता है k का? k is equal to omega by c. So from a medium where it is coming, it is given that take it is as k naught. बाद में ये हो जाएगा k is equal to sum omega by v. बाद में तो चेंज हो जाएगा, राइट? और v की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? C by 2. c by 2. Okay, now got it. Okay. Thank you. So this is very good question. और उन्होंने जानबूझ के ये सारा इक्वल दिया है ताकि आप फटाफट एप्सिलॉन r को 4 ले लो. सर एग्जाम में कोरिलेट कैसे होगा? यही फॉर्मूला लगेगा क्योंकि मतलब? ये जैसे ही एप्सिलॉन आया ओनली d इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई, ओनली दिस. सो अल्टीमेटली आपको क्या कैलकुलेट करना है? व्हाट यू वांटेड टू कैलकुलेट? वेव बताओ. नंबर. यू वांट टू कैलकुलेट वेव नंबर. दैट मींस यू वांट ओमेगा बाय v इन अ न्यू मीडियम. ओके. भाई तुम तो ऐसे सोचोगे फर्स्ट स्टेप कि मुझे तो ये चाहिए कि वेलोसिटी कैसे डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज आई नो ओमेगा बाय c इज के नॉट गिवन. ठीक है. ओके सर. तो k वेलोसिटी न्यू निकालने के लिए मुझे चाहिए एप्सिलॉन r. एप्सिलॉन r के लिए मुझे चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सॉरी, मुझे चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए आई नीड एप्सिलॉन r. So एप्सिलॉन r will come from here, then this step, then this step, and then this step. Like you know, in vacuum kc by omega is 1. जी. So in the medium kc by omega is n. This is the wave vector in medium of refractive index n. ठीक है. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 आ गया मतलब सी अब c by 2 हो जाएगा. यू नो दैट ना. तो सिंपल बात है कि
अगर c velocity से कोई आ रही है और refractive index is 2, so that means it will decreased by c by 2. ये तो I mean we know it from high school, right? v is equal Yes, to sir. c by n. Yes. ठीक है, तो ये वाला पार्ट थोड़ा समझ आ रहा है भाई सबको? चलो ये ट्राई करते हैं. So this is try a perfectly conducting fluid of permittivity epsilon and magnetic mu flows with a uniform velocity v in the presence of a time dependent electric and magnetic field. That means we can apply Faraday's law, right? Sir, question received new. मैं खुद ही देखता रहता हूँ क्या? Now बताइए सोनिया. Receives. आवाज गायब. अतुल आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो पढ़ो, पहले क्वेश्चन पढ़ो सब लोग. पहले सबसे पहले बगैर सोचे कि ये सवाल कैसे सॉल्व करना है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली. Underline uniform velocity. What do you mean by uniform velocity? बताइए भाई. Acceleration is 0. Force is 0. What is Lorentz force in the presence of electric and magnetic field? Anybody? QE plus Q V cross B in the presence of electric field and magnetic field. And this is equal to 0. So what is E? Minus V cross B. यहाँ तक तो आ गया. What we have to calculate? If there is a finite current density in the fluid. तो पहले बताओ, पहले ये देखो जरा. Is this clear up to this? Yes, sir. Now we have to just derive a relation del cross. Left B. side तो same है, del cross V cross B. So let us take del cross V cross B. What will this become? Del cross E, Del cross E which is minus del B by del T. minus del B by del T. Faraday's law cancels. कोई option है?
फर्स्ट ऑप्शन है। First option A is correct. फर्स्ट ऑब्जर्वेशन से इतना आसान लग नहीं रहा था। देखो जो कह रहा है वही करते जाना है। अब जैसे तुम्हें ये सोचना है कि भाई अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है और कोई चार्ज मूव कर रहा है तो हम उसके फोर्स का क्या फॉर्मूला? लॉरेंज फोर्स। यस क्लास 12th का है तो। यस सर। देन इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन आ गया। अब तो तुम्हें खुद ही बता रहा है ऑप्शन की डेल क्रॉस ले लो। दिस इज LHS of all the options, yes or no? And right side Yes. जैसे ही डेल क्रॉस ही आएगा, अप्लाई फैराडेज लॉ। देखो ईएमटी में 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अगर आपने पहले कुछ भी नहीं पढ़ा है, थोड़ा माइंड आपका एक्टिव है, यू ऑलरेडी नो दैट, आप कर सकते हो। इस दिमाग को हमेशा, इस बात को मेरे हमेशा ध्यान रखना। और क्वेश्चन देखते ही उसके बारे में मत डिसाइड करो, जस्ट रीड इट। और फॉर एग्जांपल इन दिस केस uniform velocity is very important, so we know that acceleration is 0, then only uniform velocity is possible, yes or no? Yes sir. Okay, so I will stop here. फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एडवांस वाले ही पार्ट का कुछ और डिस्कस करेंगे। ओके, सो आई होप कि आज थोड़ा क्लैरिटी आई होगी आपको। एंड वन Yes, sir. क्वेश्चन आई एम पुटिंग इन द ग्रुप फॉर यू टू सॉल्व इट। ओके, Okay sir. थैंक यू। Thank you sir.